Hello everyone, welcome to APTI Plus Academy for Civil Services. So I, on the behalf of the APTI Plus family, wish you all a very happy Republic Day. So today, as you all know, that it is 26th January, and it is a very significant day as it was the date of commencement of our Constitution. Although the Constitution it was adopted in November 1949, but this particular date was chosen as the date of commencement as it was associated with the Poon Swaraj Day, if you remember the Lahore session of Indian National Congress of 1929. Okay, so in this particular video we are going to discuss the constitutional evolution, and this is more important for your UPSC mains examination. So let's begin. So first thing that you should be aware of, that what is the meaning of this constitution, that what is the purpose, what are the aspirations associated with it. तो सबसे पहली चीज़ है दैट आपको पता होना चाहिए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, क्यों बोलते हैं सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स? बिकॉज इट डिफाइंस, इट आउटलाइंस दैट हाउ अ पर्टिकुलर स्टेट इट शुड बी फॉर्म्ड, हाउ इट शुड बी गवर्नड. ठीक है, एंड इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दैट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. Fundamental है because it is supreme, it is it dominates over all the institutions, and it also defines that what are the aspirations, what are the objectives, what are the goals of a society. ठीक है, then it is an overarching framework. ठीक है, it within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. तो इसी फ्रेमवर्क में, इसी दायरे में इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, फ्रीडम्स एंड गोल्स वी कैन परस्यू. ठीक है, देन इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, इट ऑल्सो डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी शुड नॉट, दैट वी मे नॉट ट्रेसपास इनटू. ठीक है, तो वो पहले ही डिफाइन कर देता है. देन इट ऑल्सो डिफाइंस नॉन नेगोशिएबल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, the values that are associated with our preamble like justice, liberty, equality, dignity, and it also acts as a moral compass. तो अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में यू आर इन अ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू आर इन अ डाइसी सिचुएशन, तो ऐसे में ये आपको डायरेक्शन बताएगा. सो एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी. राइट, नाउ इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट the constitution, it can change, it can change, it can develop as per the needs of the society, as per the desires of the society. So it is not a static document. So through amendments, through judicial interpretations, judgments, conventions, statutes, laws, etc., ये आपका constitution it can change. The various provisions of the constitution they can change. Then it is now the question arises that what is the significance. ठीक है, तो इट इज़, इट शेप्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शेप्स आवर गवर्नेंस, इट शेप्स आवर नेशनल आइडेंटिटी, इट गिव्स अस अ नेशनल आइडेंटिटी. तो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स द डिसीजन मेकिंग पावर्स बिटवीन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. देन it also exhibits our conflicts, our aspirations, our ideals, national struggle. It also provides individuals with a sense of moral identity. ठीक है, and it also accords an Indian identity to the citizens, to individual citizens. So this is the significance of the constitution. Now, what are the objectives here? Okay, so if you remember in 1997, the Supreme Court remarked upon the objective of the Constitution. The Supreme Court said, courts, that Constitution envisions establishing an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of the Bharat Republic. Unquote. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क किया था सुप्रीम कोर्ट ने. सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्स टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश कंडीशंस फॉर अ just society, for a fair society. Right, secondly, it aims to determine who holds the decision making authority in the society. तो ये भी है. Third, it the formation of the government is decided by the rules mentioned in the constitution.
तो जो आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हो वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होता है. The Constitution provides a set of basic rules that allows for minimal coordination amongst the members of the society, and it also aims to set limits on what a government can impose on its citizens. So these are some of the objectives of the Constitution. Now here a term, very important term, that is constitutionalism. It comes into the picture. Basically, this is a political philosophy. ठीक है. इसका क्या है बैकग्राउंड, दैट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी विद द गवर्नमेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम द पीपल एंड इट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो जो इफ यू रिमेंबर द टर्म्स लाइक मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स एक्सेट्रा हैं, तो वहाँ से ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का ओरिजिन मिलता है. तो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, इट एम्स टू लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है. तो ये एक नेगेटिव ओरिएंटेशन का वर्ड है, मीनिंग इट सीक्स टू डिसएम्पावर एंड कंस्ट्रेंट द गवर्नमेंट. तो अगर आपने जैसे सुना होगा रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इलेक्टेड गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ें इसके कोर पिलर्स हैं. ठीक है. तो आपने देखा होगा इंडियन सिनेरियो में वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, वी हैव चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्रैक्टिस. तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दे मेंटेन, राइट. सो दिस understanding is important with respect to our constitution. Now with this we start with the historical evolution of the constitutional principles. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है, दैट इज़ द नेशनल मूवमेंट. तो हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, तो जो वो काफ़ी लंबा चला. नाउ दीज प्रिंसिपल्स दे वर फोर्ज्ड ड्यूरिंग दिस लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने सिर्फ उन प्रिंसिपल को सॉलिडिफाई किया जो कि हम ऑलरेडी इनहेरिट करते आ रहे थे ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है. फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. तो आपका द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946. सो बेसिकली दिस इज द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट दिस नेशनल मूवमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड, राइट. तो इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के थ्रू हमने जो हमारे होप्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है, वो सब हमने उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के थ्रू लेकर आए. लाइक कोर आइडियल्स विच वर सोवरेनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. सो दीज बिकेम द मोरल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ after this, now comes the acts, the British era acts. So initially we start with the regulating act of 1773. तो यहाँ पर क्या हुआ था, if you remember from your history or the initial polity classes, that governor of the Bengal, he became the governor general of Bengal. ठीक है. Then there was establishment of the Supreme Court of Calcutta, and the Bombay and Madras presidencies, they came under the authority of GG of Bengal. So basically we are moving towards centralization. Then the servants of the company, they were prohibited from engaging in any private trade, and the control of the British government over the company, it was getting strengthened. तो जो आपका court of directors था, the governing body of the company, they had to report their revenue, civil, military affairs in India. ठीक है. So this came through the regulating act of 1773. Then came the Pitt's India Act of 1784. So the company's Indian territories, ठीक है, तो they were now called the British possessions in India. So now there was a distinguishment made between the commercial functions of the company as well as the political functions, and a system of dual government came into picture. तो आपके जो court of directors थे, they used to manage the commercial affairs, and a new body called the board of control, they were managing now the political affairs. So this happened with the Pitt's India Act. Then came the Charter Acts, like Charter Act of 1813. So Charter Act of 1813, it ended the company's trade monopoly in India. ठीक है. कुछ थे कंडीशंस लाइक टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, इट कंटिन्यूड, बट जो ट्रेड मोनोपोली इंडिया में थी वो एंड हो गई थी.
it also permitted the Christian missionaries to promote Western education. तो ये some important features थे. Then there was 1833 में Charter Act. तो यहाँ था, दिस इज कंसिडर्ड एज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन. तो जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, विच स्टार्टेड विद हेस्टिंग्स, नाउ इट बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो जैसे आपको इफ़ यू रिमेंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो पहले क्या था, हम लॉज को रेगुलेशंस बोलते थे, रेगुलेटिंग रेगुलेशंस. नाउ अब इस एक्ट के अंडर दे वर रेफर्ड एज एक्ट्स. अब हम एक्ट्स बोलने लग गए. एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ EIC, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर एंडेड. नाउ इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. ठीक है. देन देर वर सम अदर कंडीशंस लाइक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर योर सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा. फिर आती है आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1853. So this was the last charter act. So here the legislative and executive functions of the Governor General's Council, they were separated. तो सेपरेट आपका गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, जिसमें आपके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलेंगे इसको. एंड देयर वर टोटल 6 members. एंड दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल, इट ऑपरेटेड लाइक अ मिनी पार्लियामेंट. ठीक है. सो ओपन कंपटीशन सिस्टम इन स्पिरिट अब स्टार्ट कर दिया गया था. देन मैक्यूले कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज ऑल्सो केम इनटू पिक्चर इन 1854. सो दीज वर सम ऑफ द प्रोविजंस. देन केम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसको हम GG एक्ट भी बोलते हैं, दैट इज द गुड गवर्नमेंट एक्ट. एंड अब आपका बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग. And the system of double government, it got ended, and the new office of your Secretary of State, that came into picture, who was basically the member of British cabinet. So these were the we can say from 1773 regulating act till 1858, जब तक आपका क्राउन रूल शुरू नहीं हुआ. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नहीं हो जाती. सो वी कैन से दैट दिस मार्क द फर्स्ट फेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन. Now in the second phase we talk about the Indian Council Acts. ठीक है. Starting with the 1861 Act, which was the beginning of the representative institutions, क्योंकि अब इंडियंस एसोसिएट होने लग गए थे लॉ मेकिंग प्रोसेस में. एंड द लॉ मेकिंग, द लेजिस्लेटिव पावर्स which were taken away from Bombay and Madras, they were restored back. And the portfolio system, it also got recognized. और इसी में आपका 1861 के एक्ट के थ्रू द वॉइसरॉय, दे वर एबल टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस ऑल्सो. ठीक है. उसके बाद आते हैं आपके 1892 की काउंसिल एक्ट. नाउ दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेकिन मेजोरिटी ऑब्वियसली ऑफिशियल ही रहेगी. और इट ऑल्सो इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ योर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट. ठीक है. डिस्कशन ऑफ द बजट नाउ वाज अलाउड. देन केम द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑल्सो. सो हेयर द मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज द वॉइसरॉय. सो दे इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, both central as well as provincial, and the members, they were now also asked to ask supplementary questions, move resolutions on the budget, etc. ठीक है. And there was association of Indians for the first time with the executive council of the viceroy and governor. So अगर आपको याद होगा, SP Sinha, he was the first Indian member. And there was introduction of separate electorate. ठीक है. तो Muslim members were to be elected only by Muslim voters, and this is also said to legalize basically communalism in India. तो हम बोल सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो, ही वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया. फिर आती है आपकी 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑल्सो नोन एज द मोंटैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. So Montagu, he was the Secretary of State, and Lord Chelmsford was the Viceroy. Now this particular act, it brought the diarchy. ठीक है. तो आपकी जो provinces थे, there were the diarchy was introduced. So there were transferred subjects and reserved subjects.
तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विच वर टू बी एडमिनिस्ट्र्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स जो आपके गवर्नर और हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे विल देमसेल्व्स एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो पहली चीज़ है डायर की। सेकेंडली बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ एंड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब दो पार्ट से, एक अपर हाउस लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली द लोअर हाउस, एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो आपके आए थे पिछले एक्ट के थ्रू, दे वर नाउ एक्सटेंडेड फॉर 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। The franchise, the voting rights, they were also extended, but to a restricted group, including like on the basis of property ownership, taxation, education, etc. आपका हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंडन, दिस पर्टिकुलर ऑफिस वॉज क्रिएटेड। देन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजंस थे। आपका प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटर के लिए अलग अलग बजट होगा। देन appointment of a statutory commission after 10 years, if you remember the Simon Commission 1927 में। तो अब आपका नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। तो जैसे मैंने बताया, इट वाज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड दे हैड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इट वाज अ 7 मेंबर कमीशन एंड देयर वाज नो इंडियन, इसलिए उसको हमने उसका विद्रोह किया था। एंड इट रिकमेंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ बेसिकली डायरकी बट कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, फिर दे ऑल्सो सेड देर वर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन एक्सेट्रा। तो ये जो इस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, दे गोट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली आपका ऑल इंडिया फेडरेशन होगा जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देन द सब्जेक्ट्स दे गोट डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, federal, provincial and residuary, and the residuary powers they had to be with the viceroy. Provincial autonomy was introduced and diarchy was abolished in your provinces. सेंटर में अब डायरकी होगी। ठीक है, separate electorates they got extended to SCs, women's, laborers etc. Again the franchise was extended। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेडरल कोर्ट आया 1937 में, जबकि आपका सुप्रीम कोर्ट, इफ़ यू रिमेंबर, दैट वाज थ्रू द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एंड फाइनली वी हैड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जहाँ पर इंडिया इट वाज प्रोक्लेम्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन नेशन, राइट। And India was to be partitioned into 2 dominions, that was India and Pakistan। तो आपका जो वॉइसरॉय का था ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था, वो सब आपका एबॉलिश हो गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, it was granted the authority to create and approve any constitution and revoke any law, any act, including the Independence Act itself। So this was important। So basically there was the lapse of British paramountcy in India, and the these Governor General of India or the provincial governors, they served as only nominal heads। जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो जाता, तो आपका जो एम्प्रेस या एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था, तो वो सब चीज़ें अब ड्रॉप हो गई थी। तो हमारा अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 15 अगस्त को। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बिकेम लॉर्ड माउंटबेटन, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ही वॉज सी राजागोपालाचारी। तो दिस वे वी कैन डिवाइड द constitutional evolution through these acts। in first phase when the company was there, in the second phase when the crown was there, right। then comes now the constituent assembly, उनका क्या रोल था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट एम रॉय ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। ठीक है, 1935 में आईएनसी ने अपना ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ब्रिटिशर्स ने इसको सिर्फ एक्सेप्ट किया थ्रू योर अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, दो 1935 में रिक्वेस्ट चली गई थी। नाउ ये चीज़, दिस पर्टिकुलर चीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ठीक है, तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, जैसे आपका पब्लिक डेलिब्रेशन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ दिस एक्सरसाइज वुड बी हेल्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो डिस्कस करके डिफरेंट प्रोविजंस को एक्सेट्रा को दे विल बी डिसाइडिंग. Now, the constitutional advisor was B.N. Rao. So, these are some of the important factual details that you should know. And the drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. Right. Introduction of the universal suffrage. Okay, if you remember. So, this was only one provision of the constitution which was passed without any debate, virtually without any debate. ठीक है, तो आपका कैबिनेट में एक्शन प्लान था 1946 का. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय दिस प्लान, जिसके मेंबर्स इफ़ यू रिमेंबर लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर थे. सो देर वर 389 मेंबर्स, 296 टू बी फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, एंड the seats they were allocated, they were allotted in proportion to the respective population, like 1 million 1 seat उस तरीके से था. So there were three principal communities, that is your Hindus, the Muslims, Sikhs and the general category. And this particular assembly it was partially elected and partially nominated. तो जो provincial legislative assembly से आ रहे थे they were partially elected and the representatives of the princely states they were partially nominated. ठीक है, तो जब members they are being indirectly chosen by the members of the provincial assembly. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि partially elected. Now assembly में महात्मा गांधी he was not involved, so this is important that you should know. Now coming to the working, so first meeting it was held on 9 December 1946. ठीक है, and there were total 11 sessions over 2 years 11 months and 18 days, and the final session it was on 24th January 1950. ये इस दिन फाइनल सेशन हुआ था. जब लेकिन जो आपका सेशंस थे, ठीक है, तो दे केप्ट ऑन रनिंग as the provisional parliament of India from January 26, 1950 onwards till the formation of new parliament was held after the first general elections in 1951-52. ठीक है, तो वो चीज़ आपने नोट करनी है. एंड द फर्स्ट प्रेजिडेंट वॉज राजेंद्र प्रसाद, दो द टेम्परेरी प्रेजिडेंट ही वॉज एस सिन्हा. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. तो फर्स्ट मीटिंग में देर वर 211 मेंबर्स, देर 211 मेंबर्स वर प्रेजेंट. मुस्लिम लीग इट डिसाइडेड नॉट टू अटेंड. तो ओल्डेस्ट मेंबर थे ये, तो हैंस ही वॉज चोजन एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट, एंड दिस प्रैक्टिस वॉज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रांस. तो ये फ्रांस में थी ये चीज़. तो जब तक इलेक्ट नहीं हो जाते प्रेसिडेंट, तो जो ओल्डेस्ट मेंबर्स हैं तो वो प्रेसिडेंट रहेंगे. देयर वर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एंड वी.टी. कृष्णमाचारी. ठीक है, ये चीज़ आपको फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज यू ऑल नो इट वाज मूव्ड ऑन 13th December 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डेट. एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनिशियली वो अब्सटेन की फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग. ठीक है, members of the Muslim League from the Indian Dominion they joined the assembly after agreeing to the Mountbatten plan for partition, that is after June 3, 1947. Right. Now coming to the key committees and the chairpersons associated with them. तो एक तो थी आपकी मेजर कमिटीज़. ठीक है, मेजर कमिटीज़ जिसमें 8 देर वर 8 मेजर कमिटीज़. दिस यू हैव टू रिमेंबर, like for example Union Powers Committee and then Union Constitution Committee. So these two they were headed by Jawaharlal Nehru. Then there was one States Committee again for this was for negotiating with the states, again headed by Jawaharlal Nehru. फिर कुछ कमिटीज़ थी जो कि like Steering Committee and the Rules of Procedure Committee. These were headed by Dr. Rajendra Prasad. Then Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, etc. This was headed by Sardar Patel.
Provincial Constitution Committee was also headed by Sardar Patel, and the drafting committee, as we all know, it was headed by Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. माइनर कमिटीज बहुत सारी थी, लाइक, and it had multiple chairpersons. Some of them were not assembly members. For example, the ad hoc committee on the Supreme Court, it was headed by S. Vardachari. He was not an assembly member. Similarly, your linguistic provinces committee, SK Dhar, not an assembly member. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे थे those who were not your assembly members. Then one of the most important committee was the drafting committee. ठीक है. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट थी, इनका टास्क बहुत इम्पोर्टेंट था. सो दिस हैड 7 members and it was set up on 29th August 1947. So members of this committee headed by Dr. B.R. Ambedkar, then Gopal Swami Iyengar, A.K. Iyer, K.M. Munshi, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव. ही रिप्लेस्ड B.L. मित्तर. ठीक है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ही वॉज रिप्लेस्ड बाय माधव राव. एंड T. कृष्णमाचारी, ही ऑल्सो रिप्लेस्ड D.P. खेतान, हु डाइड इन 1948. So this drafting committee, after taking into consideration the proposals of various committees, it prepared the first draft, which was published in February 1948. ठीक है, तो ये हुआ आपका. 8 months were given to the people of India to discuss the draft and propose any amendments. So the second draft, it came in October 1948. ठीक है. So then if you see the drafting committee, it took less than 6 months to prepare the draft. ठीक है. Altogether this drafting committee, it convened for only 141 days. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो सर्टन पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग कमिटी. नाउ कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्शन. तो जैसे मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्समेंट में आया. एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट, राइट? सो this you have to remember. And also, as I told you, that initially there were 389 members, and this got reduced to 299 after your Muslim League members, they withdrew, right? So there are certain days, if you like, you should not get confused in them. So, and these were associated with the constituent assembly. For example, the Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1949. May 1949 में Commonwealth. Secondly, आपका national flag on 22 August 1947. ठीक है. फिर आपका national anthem on 24th January 1950. ठीक है. Then your national song also on January 24th 1950, and Dr. Rajendra Prasad also as the first president on 24th January 1950. ठीक है. So these are some of the important things. And the preamble, it was enacted after the entire constitution was already enacted. ठीक है, तो basically to align it with the philosophy of the constitution, right? Now important, there have been certain features etc. you can easily from your politics classes also. Now, for example, what are the core features of the constitution? If we quickly take them, that it is borrowed constitution. Borrowed because it the people, the members, they refer to the constitution of 60 plus countries. Okay, and majority of the constitution, it can be referred to by the Government of India Act of 1935. So the structural part is coming from this. Philosophical part is coming say from the American and the Irish constitution. Political part is coming from the British constitution. Okay. Then it is a blend of rigidity, that is your American constitution, and flexibility, that is your British constitution. Okay. Then it can also be said to be synthesis of parliamentary sovereignty, that is coming from Britain, and judicial supremacy, that is coming from US.
Another important feature is the federal system with unitary bias. So इसको हम क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है. देन इंपॉर्टेंट अदर फीचर्स आर लाइक योर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3, DPSP पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A. Secular state, it was added by your 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, right? Universal adult franchise, again the voting age of 18 years. So it was through your 61st Constitutional Amendment Act of 1988. Initially it was 21, so it was reduced. We have a single citizenship, okay? We do not have dual citizenship. Then there are certain emergency provisions, right? Panchayati Raj, third tier of government. So these are some of the important features that you should know. Now, criticism. Okay, criticism. Now there are two types of criticism. Now one we will discuss with respect to the Indian Constituent Assembly. Like a criticism है that non-representative composition. Non-representative. मतलब so they that the members they were not directly elected by the people of India and on the basis of universal adult franchise. Second, Congress dominance. 82% of the seats in the assembly they were held by ANC. Okay. Third, it is often said that the constitution is un-Indian and slavish imitation of the western constitutions. कि हमने वहाँ से बस उसको तरोड़ मरोड़ के किसी तरह अपने constitution को बना लिया. It is often said that the exercise itself was very time consuming क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट को लगभग 3 साल लग गए. ठीक है, तो ऐसे में इट बिकेम काफ़ी लेंथी बन गया कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी लैंग्वेज इट ऑल्सो बिकेम कॉम्प्लिकेटेड एंड समथिंग विच द लॉयर्स स्पेशली द पीपल फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, ठीक है, दे कैन ईजिली मैनिपुलेट एंड यूज इट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, राइट. It is also said that this constitution of India it departed from the Gandhian principles. ठीक है, कम्युनिस्ट दे ऑल्सो अपोज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रिंसिपल. ठीक है, और कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं दैट इट इज़ अ कार्बन कॉपी और द अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द you can say the criticisms associated with the Indian Constituent Assembly as well as the your constitution itself, right? But at the same time the reality is different. It was 3 years. It reflects the deep deliberation that the members had, right? Also only the constitutions they were referred to, the Indian socio historical grounding, so every provision was made with respect to that, and we can say that depending upon the working of the constitution that yes it is a good constitution. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. सो नो वन कैन क्रिटिसाइज दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एज पर आवर नीड्स एक्सेट्रा. तो उस टाइम पे ठीक है हो सकता है कि लोगों को लगा होगा कि हम कॉपी कर रहे हैं, बट बेसिकली वी वर ओनली रेफरिंग टू. ठीक है, तो डायरेक्ट कॉपी नहीं बोल सकते हम उस चीज़ को. नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो here in terms of sourcing it can be said that majority, as I told you, is the Government of India Act 1935. like 2/3 of the constitution can be sourced to this. आपका चाहे ब्रिटिश फेडरल स्कीम हो, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एवरीथिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देन कम्स द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड. तो ये सब हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं. नाउ कम टू यूएस. ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट of the president, removal of the Supreme Court, High Court judges, post of vice president. These are coming from the US Constitution. Then we have the Irish Constitution, DPSP.
ठीक है. Nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president. So these are some of the features that we can source to Irish constitution. Canadian constitution, so federation with a strong center, ठीक है, तो that is from Canadian constitution. Then vesting of the residuary powers in the center, तो उसी की subsequent वो बोल सकते हैं. Appointment of state governors by the center, advisory jurisdiction of the Supreme Court. So these are from Canadian constitution. फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये सब चीज़ें. जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम योर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आपका आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द जर्मन. ठीक है, उसमें क्या है आपका, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. सोवियत, यूएसएसआर, fundamental duties, then ideals of justice like social, economic, political. तो ये प्रियम्बल में ये सब चीज़ें यूएसएसआर से. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो दैट इज़ फ्रांस. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज़ द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. ठीक है. एंड फाइनली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. राइट. So final takeaway, so the message is that the Indian constitution, it provides us the framework for governance, and it is a very important instrument to achieve our objectives, be it social objectives, economic objectives. ठीक है, तो बेसिकली हमें वो मॉरल कंपस की तरह एक्ट करता है, एंड इट गिव्स अस अ नेशनल आइडेंटिटी एंड इंडियन आइडेंटिटी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग ब्रिज बिटवीन authority and liberty, stability and change, and the states and the citizen. So the constitution is of significant importance to the citizens of India. Right. So with this we end the session. Thank you everyone.